Okay, so we have been talking about the perturbation theory. Now we are going to solve a problem related to the perturbation theory, okay? So a linear harmonic oscillator is perturbed by an additional potential energy which is proportional to the fourth power of the displacement. So find the first order correction to the ground state energy of the oscillator. Okay, so in order to understand this, we have to start with the Hamiltonian, as we always do. So the Hamiltonian for one-dimensional harmonic oscillator is given by H, which is the sum of the unperturbed Hamiltonian मैम ये directly is proportional to the fourth power. हाँ जी, fourth power. Okay, so I repeat again that we are talking about a perturbation by an additional potential energy to a harmonic oscillator. Harmonic oscillator जो हमने पहले भी पढ़ा था, harmonic oscillator can even be a particle, right? So anything that's oscillating, and we can also have some displacement in that case, and we can have potential energy in that case. So we have been studying the perturbation theory, and according to that, we describe the Hamiltonian, which is the sum of the unperturbed Hamiltonian and the perturbed Hamiltonian. Okay, so now I'm going to go to the next page. Okay. No मैम. कहाँ पे हो तुम? मैम अभी ना चाहिए. मैम मैं ये बस ये मेरी मैं ग्राउंड स्टेट तक पहुंच गया. Okay, done? No मैम बस 30 seconds. Yes ma'am. Okay, right. So मैम वो इरेज वाला सिस्टम खत्म हो गया. ये मुझे एक और ऑप्शन मिल गई है. दिस इज अ बेटर ऑप्शन, है ना? Yes मैम. ये जल्दी हो जाता है. मतलब अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि आई कैन ऐड अनदर पेज, मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकती हूँ. Okay मैम. So this is another nice option.
So here we are writing the Hamilton. अच्छा, वो पिछली equation को हमने क्या लिखा था? H is equal to H superscript 0 plus H superscript 1. So H Yes, ma'am. superscript 0 जो है, this is the first bracket, and H superscript 1 जो है, this is this term here. ये कहाँ से आई? This is coming from the statement जहाँ पे हमें बताया गया था कि the perturbation is proportional to the fourth power of the displacement. So if we represent the displacement by x, then the fourth power will be x raised to 4, and h superscript 1 is proportional to x raised to 4. And this means that we can then add a constant here and change this into an equal sign. So we can write this as ax raised to 4. So this is how we get the second term. So now the solution of the unperturbed problem will be so this will be En raised to the superscript 0 will be equal to H to the superscript 0. This will be equal to 2n plus 1 H bar omega over 2. And if we are talking, n क्या represent कर रहा है? The state, है ना? तो सबसे simple state कौन सी होती है? It's the ground state, right? So at the ground state, En0 is equal to H0 is equal to H bar omega over 2 for n is equal to 0. मैम ये 2n+1 कैसे हमने लिखा है? ये इसका थोड़ा बता दें, ये जहन में नहीं आ रहा। मेरे ये पीछे जो हमने वो सारी कैलकुलेशंस की थी ना, वहां से आ रहे हैं ये इक्वेशंस. ठीक है, राइट. अब आपने लिख लिया कि नहीं? मैम बस ये लास्ट 2 इक्वेशंस रह गई. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, welcome. So first order energy correction. अब पिछले जो पेज पे हम बात कर रहे थे, that was the unperturbed energy. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about the perturbed value, right? So we have the superscript 1, and this is given by first of all, we will use a function. So psi n is equal to k over pi h bar omega raised to 1 over 4 exponential minus k x squared over 2 h bar omega. Or we can say that psi n is equal to alpha over pi. मैम ये k over n h का ओमेगा है. बेटा k आपको पता नहीं कांस्टेंट होता है उसमें. नहीं मैम वो नहीं मैं कह रहा, मैं ये सिंबल्स पूछ रहा हूँ. k over n h का ओमेगा है ना? नहीं, k over pi, ये pi है. This is pi. Okay, ma'am. Okay. So and in this case we have used a substitution where alpha is equal to k over h bar omega.
मैम ये जो आपने सेकंड इसमें लिखी इक्वेशन ये कैसे बन गई इससे? ये बेटा हार्मोनिक ऑसिलेटर की को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूजुअली यूज दिस। ठीक है, मतलब वो जो एज का टू मेक के, हाँ ठीक है, ओके। ठीक हो गया। चले आगे। मैम बस ये लास्ट रह गई है। मैम ये सिंबल से पूछता हूँ ना, फिर मैं रुक जाता हूँ, इस वजह से फिर मैं पीछे रह जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो। ओके मैम। ओके, सो अब we are going to use the expression for the perturbed energy, which is given by okay. Okay, so we are going to now put the values there, the values that we've just described. So putting the मैम ये जो कंडीशन लिखी इसका नेम क्या है? कौन सी condition? ये जो मैम आपने लिखी साई स्टार और सायन, ये मैम नेम इसका जहन में नहीं आ रहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर खाली साई स्टार और साई हो इंटीग्रल, वो तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन है। हाँ, जी। लेकिन यहाँ पे हम उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, so putting the values in equation 1, in this equation we will get En1 is equal to alpha over pi raised to half integral minus infinity to plus infinity ax raised to 4 e raised to minus alpha x squared dx. ओके, ये आपको पता चल गया ना कैसे लिखा है? ये इस तरह से था, alpha over pi raised to 1 over 4 into e raised to minus alpha x squared over 2 into ax raised to 4 into alpha over pi raised to 1 over 4 e raised to minus alpha x squared over 2. ओके, मैम ये जो है वो फिर 1/4 + 1/4 तो 1 over 2 हो जाता है। ओके मैम। हाँ, so this is equal to a into alpha over pi raised to 1 over 2 and the integral x raised to 4 e raised to minus alpha x squared dx. So let alpha x squared is equal to u squared. We're making a substitution. So then x will be equal to 1 over under root alpha u, or dx is equal to 1 over under root alpha du. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने अपलोड कर दिए थे इमेजेस, देख लिए थे आपने? यस मैम मैंने देख ली है। यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। गुड, हाउ आर यू जोहेब? ये जोहेब बोल रहा था अभी। जी मैम। अच्छा, तो तुम बोल रहे हो, वो कहाँ है? मैंने बताया मैम आपको कि वो बोल रहे हैं। जी मैम, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या हाल है जोहेब? मैम ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट पेज? मैम ये लास्ट हुई रह यस गई मैम। मेरी क्वेश्चन। मैम अभी नहीं। अच्छा, सो हम बहुत यू कैन सी कि दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इट्स मतलब थ्योरी जो थी वो ऑलरेडी उसमें हमने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में हम छोटी छोटी इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। ठीक है ना?
मैम ये गॉसियन इंटीग्रल बन गया ना? हाँ जी, मैम कर लिए, okay, good, मूव कर जाए अगले पेज। right. So एक minute. Okay. So now we can make the substitution that we wrote on the last page. So this is equal to a into alpha over pi raised to half into integral minus infinity to infinity u raised to 4. Okay, so u raised to 4 over alpha square. मैम लिमिट्स पे तो कोई चेंज नहीं ना आएगा? नहीं, अभी तो नहीं आया. Minus u squared 1 over under root alpha du. So then we can say this is equal to, you just simplify it. So this is 1 over under root pi integral minus infinity to infinity u raised to 4 e raised to minus u squared du. And then we can solve this. So e n raised to 1 is equal to a over alpha square 1 over under root pi 3 over 4 into pi under the root. So this is equal to 3 over 4 a over alpha square. मैम अगर ये पेपर में मतलब कि अभी तो चले पेपर नहीं है ना, वैसे हम ये डायरेक्ट भी ऐसे लिखते तो कोई इशू तो नहीं ना होता ये हाँ हाँ इंटीग्रल का आंसर? हाँ, बिल्कुल. वो ये तो आपको पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको कहीं से भी मिल जाती हैं. वो जिस तरह अक्सर की आती हैं 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट भी लिखते तो कोई इशू तो नहीं ना होता? नहीं, कोई इशू नहीं है, अनलेस कि आप पेपर कोई इस तरह का कोर्स कर रहे हो जिसमें कि रिक्वायर्ड है कि इसको प्रूव करो. ठीक है ना? यहाँ पे रिक्वायर्ड तो ओके नहीं मैम। है ना. यहाँ पे जी मेन मैम। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये तो नहीं ना पूछ रहा इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करना है. जी तो अगर आप कोई लेट्स से मैथ्स का कोई ऐसा कोर्स पढ़ रहे हो जहाँ पे वो बकायदा कहते हैं कि आप प्रूफ करो कि ये कैसे आया या समथिंग लाइक दैट, तो फिर उसमें करते हैं. ठीक है ना? ओके मैम। राइट. सो मैम ऑल लिख लिए? okay, good. So let's go to the next page. So putting the value of alpha squared, we get en1 is equal to 3 over 4 a over k squared h bar squared omega squared. So you remember कि हमने पीछे वो एक सब्स्टिट्यूशन की हुई थी अल्फा वाली. ठीक है ना? अब उसको वापस चेंज कर दिया. ठीक है? यस मैम। So the corrected value of energy will then be given by En is equal to En superscript 0 plus En superscript 1. So it's a combination of the unperturbed part and the perturbed part. So for a harmonic oscillator, we know that En0 is equal to h bar omega over 2. And now we can also substitute the value that we calculated for En1. So this is 3a over 4 into h bar squared omega squared over k squared. And so we have the final answer, which is En is equal to h bar omega over 2 into 1 plus 3a over 2 into h bar omega over k squared. So this is your final answer. So you can put a, you can highlight this part. Okay.
Finished? यस मैम। Okay, good. बता दिया करो ना। तो मैम मुझे ठीक ये है, था कि शायद हाँ बता दिया करो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो रुकती हूँ वो मैं इसीलिए रुकती हूँ. सो वी कैन लुक एट अनदर प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस वन. ठीक है. सो अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर is perturbed by an additional potential energy proportional to the cube of the displacement. अच्छा, क्या फर्क है पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में? That मी प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब. अच्छा, एक तो मैम ये चेंज है इसमें. हाँ यही चेंज है. ठीक है. प्रूव दैट टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन energy levels are unchanged. Okay. So in this case, En1 will be equal to so H superscript 1 is equal to AX cube is equal to alpha over pi raised to half integral minus infinity to infinity. मैम ये अनचेंज्ड है. ये perturbation लास्ट टर्म जो लिखी मैम इक्वेशन स्टार्ट होने से पहले अनचेंज्ड. हाँ unchanged. E raised to minus alpha x squared dx. And this is equal to a into alpha over pi raised to half integral minus infinity to infinity x cube e raised to minus alpha x squared dx. ठीक हो गया? मैम अभी लिख रहा हूँ ये देखो लास्ट इक्वेशन. मैम फिर ये नीचे आके वो en की वैल्यू हमने लिखी है ना, हमने वो सिर्फ h1 की वैल्यू पुट की है ऊपर en में. हाँ जी. ठीक हो गया? नो मैम. यस मैम लिख ली. Okay. So as the integrand is the product of
even and odd functions. So it is equal to 0. Therefore, en1 is equal to 0. And therefore, we can write, as we know, that the total en value is equal to the sum of the unperturbed part and the perturbed part. So since the perturbed part is 0, so we can write this is equal to en0 plus 0. And therefore, en is equal to en0. So this is the answer in this case. And मैम अगर इवन होता तो फिर हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व फिर किया उस उसको तरह से इसको आपने भी करना हाँ बिल्कुल करना था ये उससे इजी हो गया ना so as perturbed values are equal to the unperturbed, therefore the energy levels are unchanged. Okay, right. So मैम बस 20 सेकंड okay, कोई बात नहीं, मैं अटेंडेंस लेती हूँ एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट मीटिंग का भी वो आपको देना मैंने ओके ठीक है सो जुहेब तहरीम प्रेजेंट मैम गुड रबिया रबिया नहीं आई है ना ओके मैम उसका नेट नहीं वर्क कर रहा है ओके मरियम आई सो मरियम का है शजा Present, ma'am. गुड हादी Yes, ma'am. गुड उस्मान इज नॉट हियर है ना अच्छा हारिस Yes, ma'am. गुड हारिस दुर्दाना यस मैम okay Muiz Yes, ma'am. Mohsin is not here right and Zamran प्रेजेंट मैम Shamjar Present, ma'am. Ahmed Naseem and Ahmed Naseem है Yes, ना ma'am. हाँ आतिका यस मैम good अच्छा अब I'm going to give you the invite for the second meeting and I'm going to end this meeting okay मैम मरियम का मैसेज आया कह रही मैं हूँ मीटिंग में हाँ वो मुझे भी नजर आई थी फिर बीच में पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया चलो ठीक है सही हो गया I'm going to restart the second meeting okay मैम वो आईडी तो बता दें आईडी मैं व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ ठीक है चलें ठीक है okay